बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटर पार्ट फर्स्ट कंप्यूटर साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरखास्त है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक डिजिटल एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। बुनियादी तौर पर आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। ये तीनों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने अभी तक कंप्यूटर पर बनी मेरी स्कीम की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है और मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स की आसानी के लिए मैंने उसको कमेंट्स में भी पिन कर दिया है। आप उसमें से आसानी से देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर में से लॉन्ग आएगा और किस चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट आर बारकोड रीडर्स, व्हाई आर दे यूज्ड, व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, differentiate between soft copy and the hard copy, differentiate between data and information, what is the use of OCR and OMR, differentiate between hardware and software, what is screen resolution, also define pixel, differentiate between bit and byte, differentiate between hypermedia and multimedia, define input, also write the uses of trackball, what is feasibility study, differentiate between pilot convergence and parallel conversion, define operating system and utilities program, what is the differentiate between VGA and XVGA, what is mean by CSMA, DC, differentiate between intranet and extranet, differentiate between uploading and downloading, what is differentiate between router and bridge, differentiate between de facto and de jure standards, describe the functionality of application layer and presentation layer, define buffers and telnet, define client server and peer-to-peer model, what is text editor, list some uses of word processor, define font, write the name of any 3 font style, differentiate between header and footer, differentiate between cut and copy, describe the uses of clipboard and differentiate between character formatting and paragraph formatting. क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। डिफरेंशिएट बिटवीन बस बैंड एंड ब्रॉडबैंड, differentiate between analog and digital signal, differentiate between asynchronous and synchronous transmission, differentiate between bandwidth and FDM, what is encoding scheme, define BCD, what is differentiate between ASCII and Unicode, differentiate between modulation and demodulation, differentiate between P-room and EP-room, what is the differentiate between serial and parallel port, state the purpose of input-output units, define interrupt, define DMA, state the purpose of CPU register, define stack, describe cache memory, what is fetch, decode and execute cycle, differentiate between memory and storage, what is BIOS, differentiate between compiler and interpreter, what is booting, what is the instruction format, differentiate between SRAM and DRAM, what is a separate sheet program, write some uses, differentiate between function and formula, differentiate between absolute and relative reference, what is cell and cell address, differentiate between active and passive cell, what is cell formatting. क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। डिस्क्राइब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, explain how computer can be useful in marketing, what is CBT, differentiate between CAD and CAM, define e-commerce and electric shopping, what is desktop publishing,
State the purpose ATM. What is computer simulation? What is biometrics? Why backup is important? What is password? What is privacy issue? What do you know by the data protection? What is use of control panel? Differentiate between Windows and Windows operating system. What is plug and play? Differentiate between multitasking and multiprocessing. What is desktop? What is a recycle bin? Differentiate between CLI and GUI interface. Define primary partition and extended partition. State the purpose of operating system. What is internet? Differentiate between web browser and the web server. What is differ among the URL and search engine? Define www and ISP. Differentiate between IP address and DNS address. Define email and email address. What is differentiate between downloading and uploading? तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए इंटर पार्ट फर्स्ट कंप्यूटर साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह मेरी आज की वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है और इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।